on, our next eminent speaker is Shri Rajesh Mandawewala, the Managing Director, Welspun Group. I request you all to have a round of applause and invite sir on the stage. Along with him, may I request Shri Ashish Gujarati, the President of Gujarat Chamber of Commerce and Industry, as a questioner. And for the felicitations, before you proceed, we would like to present a small token of appreciation. May I request Shri Arpan Shah to please come up on the stage, along with Ashish ji to please do the honor. Both of you, sir, please present the memento to Shri Rajesh Mandawewala. We are eagerly waiting to hear one more success journey. Ladies and gentlemen, let's hear it from the man himself. Over to you, sir. Respected Darshana Ben, Ms. Ruprashi Mahapatra, my friends from the textile industry, wish you a very, very good evening. I know it's been a long day for all of us, and the eminent speakers before I showed up on the dais have practically delivered my messages that I had prepared for the day, but I had some very interesting 90 minutes in the industry interaction with Madam Darshana and her team, and I have been around 40 years, Madam, and let me tell you that I have never felt so invigorated in meetings with the political and the bureaucratic diaspora that I experienced today. Madam was absolutely on top. I think there must be 70-80 people from the industry in the room. Madam ने अकेले हम सबको सलट लिया. मैडम के पास हर चीज का जवाब था और मैडम फुल्ली प्रिपेयर्ड थी. इतने प्रिपेयर्ड तो हम अपनी कंपनी चलाने में नहीं रहते हमारी इंडस्ट्री में जितनी मैडम फुल्ली प्रिपेयर्ड थी. एक मैंने वहीं बैठे बैठे मैडम एक लिस्ट बनाई कि आप और आपकी सरकार ने क्या क्या किया है. हमने मांगा कस्टम ड्यूटी कॉटन पे बंद कर दें, आपने बंद कर दी, लेकिन कॉटन तो वहीं रहा. कॉटन के भाव तो घटे नहीं, उल्टे कुछ ना कुछ बढ़ ही गए. हमने रॉड टैप ROSTCL आपसे कहा आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए, आपने वो भी कर दिया. अब हम कह रहे हैं कि अब हमको 85% ही मिल रहा है. हमने कहा इन्वेस्टमेंट के इंसेंटिव्स कंटिन्यू करिए. आपने हमको PLI की स्कीम दी. आपने पहले ATF दिया जिसमें हजारों करोड़ हमारी इंडस्ट्री को बांटे, और अब आपने PLI स्कीम इंट्रोड्यूस की. इंडस्ट्री का रिस्पांस थोड़ा सा ल्यूकवार्म रहा. अभी तो ये बात पूरी नहीं हुई, उसके पहले आपकी PLI 2 और 3 की चर्चा शुरू हो गई. इंडस्ट्री ने FTA मांगे, आपने UAE डिलीवर कर दिया, ऑस्ट्रेलिया डिलीवर कर दिया. UK की बात चल रही है, ऑस्ट्रेलिया की बात चल रही है. बाकी के भी मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप और आपकी सरकार बाकी के भी सारे FTAs जहां होने चाहिए वहां पे इनिशिएटिव लेंगे. TUF की स्कीम खत्म हो गई, अभी खत्म नहीं, उसकी पहले TTDS की चर्चा शुरू हो गई. आज मैडम ने ये कहा कि उसके ऊपर जोरों शोरों से काम चल रहा है. और उसमें कोशिश करेंगे कि कोई ब्लैकआउट पीरियड नहीं रहे. इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स, एंटी डंपिंग ड्यूटी BIS में जहां इंडस्ट्री को सपोर्ट चाहिए वहां पे मिल रहा है. आगे के लिए भी फ्यूचर के इनिशिएटिव जैसे TTDS मैंने कहा, PLI 2 और भी काफी स्कीम्स की तरफ सरकार का ध्यान है.
भाइयों, मैं आपको पूछ रहा हूं कि सब कुछ सरकार करेगी तो हम क्या करेंगे? हम लोगों का, हम इंडस्ट्री हमारी है, मुनाफा हमको मिल रहा है, तो सभी कुछ अगर हम कहेंगे कि हमारे सारे ही प्रॉब्लम सरकार के प्रॉब्लम है, तो आई बिलीव दैट वी आर रनिंग अवे फ्रॉम आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी फिलॉसफी को लेके हमने वेल्सपन इंडिया कंपनी जो आज है, मैं नहीं मानता कि हम सक्सेसफुल हैं। हमने अभी एक इनिंग खेली है, अभी हमारे को दूसरी इनिंग खेलना बाकी है। लेकिन इसी फिलॉसफी के साथ हमने इस बिजनेस को शुरू किया, और कोई, मैं इसको एज आई सेड सक्सेस स्टोरी नहीं मानता, और मेरे बड़े मैसेजेस मेरे पहले आए एमिनेंट स्पीकर्स ने दे दिया, लेकिन एक या दो चीज मेरे को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं और ऐड करना चाहता हूं। एक, हमारी जर्नी इस कंपनी में शुरू हुई कस्टमर से और खत्म होती है कस्टमर के साथ। हर जो कंपनी का एम्प्लॉय है, मैनेजर है, सीनियर मैनेजमेंट है, मालिक है, उसका थॉट प्रोसेस सबसे पहले कान खुले रखने से शुरू होता है कि कस्टमर क्या कह रहा है। जब हमने कंपनी शुरू की, टेक्सटाइल मिलों का जमाना था, उस टाइम पे कपड़ा बना करता था और राशन हुआ करता था। लोग, उनके सेल्स मैनेजर अपने डीलरों को, डिस्ट्रीब्यूटरों को ये कहते थे कि भाई ये कपड़ा है, तुम्हारे को क्या पसंद है नहीं पसंद है, आई डोंट केयर, दिस इज व्हाट आई हैव, अपना अपना माल लिखा लो, जब बनेगा तब आपको भेज देंगे। सो वी, when we started business, we realized that our journey, we can't run our business like this. So we have to give to the customer what the customer wants, and the rest is history, because the business started in early 1990, and from a modest 10, 15, 20 crores in revenue, and almost two times of, in the last 30, 35 years of two times almost staring at bankruptcy. Today, the company has grown to about 8, 9,000 crores in revenue. And principally, this we believe that, that it is the customer who brought this company where it is. And it is, we still believe today, it is the customer who puts the food in the mouth of our children. So, and the definition of the customer changes. For someone, his distributor is a customer. For someone, the dealer is a customer. For someone, the retailer is the customer, like it was for us, that we went out, disintermediated, started selling to all the retailers worldwide directly. And mind you, in those days, it was not easy to sell the merchandise to the retailers directly, because this, we had no trust. Like Puneet said, and I was smiling when he said the factor trust. So the word India had no trust. So we had to first bring trust. And what we did was invested in world-class technology back then, 30, 35 years, and the company has continued to do that over the last 30, 35 years. And first bridged that trust gap, and where we made mistakes, where we did not know how to make product, we went out and tried to learn by expertise. We bought Christie, for example. One of our customers in the UK said, your product is not as good as Christie. And that struck me. And the same year, we made an offer to buy Christie. And true to the customer's word, they made towels much better than we did. And so we bought Christie, we learned from them. We brought all those people back home to our factories for a good period of 2-3 years, completely overturned the way we thought of what quality was and what customer service was. So you know, coming back, so a customer is a different customer for everyone, but I think the philosophy remains the same, that you work for your customer, listen carefully, and do what the customer wants you to do. Our customer said, look, we have 200,000 SKUs in our assortment. Now we can't be an expert for every single thing that we sell. You become the expert for us. Put a team of people in place in America, in Europe, learned
what our customer's customer was thinking, which was the actual consumer, and started doing market research and get the pulse of what our customer's customer wanted from our customer, which was the retailer. And to a point where today, most of our customers, I would say half our customers actually, they don't write orders to us. We write our own orders and we manage what we have to make, what we have to ship to them, what they should buy, how much they should buy, what should go to which one of their DCs, which one of their warehouses. So, coming back to the word trust, we learned how to manage our customers' business and make them more profitable. Look, if your customer is profitable, you will be profitable. If your customer is growing, you will grow your business. So, for us, our journey was to service the customer, understand the customer, and do what they wanted. And it continues to remain that. Puneet made another very important, I think, futuristic point about the digital age, digitization, data, integration. He's actually talking about the future consumer. He's talking about today's consumer. And I believe COVID has accelerated the process to a point where I understand about 28-30% of the global textiles now in the Western markets get actually sold online. This new age customer, this new age consumer is very discerning. He or she also cares for the planet. They care the way you and I make the product and ship it out to them. They care if we are taking care of the planet. They care whether or not you are polluting. They care whether or not we are guzzling up resources like water, and whether or not our processes of manufacturing are going towards renewable, or we continue to guzzle coal, oil, and deplete the resources of the world. They care whether we reuse, whether we are altering our processes to ensure that we are capable of reusing most of the waste and there is no waste in the system. They care if you collect back what you sold to them, just break it up, recycle it back into raw materials and make their product again. This is the new age customer, ladies and gentlemen. All of us, some of us from my generation will also need to learn and understand this, because most of them, some of them I know, but I know most of them have come up the very, very hard way with when they started, they had not a penny in their pockets. I'm sure, Rajendra ji, you didn't have a penny in your pocket when you started. But the world is changing. We have to understand what the new consumer wants, because if you are going to tomorrow guzzle resources, it is like polluting today. जब हम कहते हैं कि कोई गंदा पानी नदी में डाल रहा है, उसको हम कैसे देखते हैं कि ये सही बिजनेसमैन नहीं है। वैसे कल आप कोयला जलाओगे, कल आप तेल जलाओगे, कल आप रिसाइकल नहीं करोगे, आपका कंज्यूमर, आपका कस्टमर आपको उस नजर से देखेगा। हमको अपने ऑर्गेनाइजेशंस को उस कस्टमर्स के लिए तैयार करना है। सरकार से 2%, 3%, 4% एक्स्ट्रा लेके उस कस्टमर का माइंड हम बदल नहीं पाएंगे। वो काम हमारा है, वो हमको ही करना होगा। और जो कंपनी, मेरा ये मानना है और मेरा एकदम निश्चित मानना है कि जो कंपनी ये नहीं कर पाएगी वो इस बिजनेस में नहीं रहेगी और इसमें ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। 5, बहुत बोलो तो 7, 8, 10 साल। सो हमको ये सोचना होगा और इसको अपने अंदर इम्बाइब करना होगा। कस्टमर हम लोगों को एक और मैसेज दे रहा है, कंज्यूमर हम लोगों को एक और मैसेज दे रहा है। वो ये कह रहा है कि आप व्यापारी हो, आप बिजनेसमैन हो, लेकिन आपका कोई हक नहीं बनता कि आप इर्रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपने बिजनेस को चलाओ। आप अपने मुनाफे के लिए मेरी धरती को खराब करने का आपको कोई हक नहीं है।
मेरी धरती का रिसोर्सेज आपको कोई यूज करने का हक नहीं है। भाई और बहनों, हमने वेल्सपन में इसको बड़ा दिल से लिया है। हमारे यहाँ जो पुनीत ने तीसरा मैसेज दिया सस्टेनेबिलिटी का, इसको हम दिल से, ये सरकार ने हमसे कहा है 2% प्रॉफिट का आपको CSR करना है, हमारे लिए इट इज नॉट चेकिंग द बॉक्स। वी जेन्युइनली बिलीव दैट बीइंग वन ऑफ द लीडर्स इन द इंडस्ट्री, वी हैव टू शो द वे, वी हैव टू गिव बैक to the society what we have got back in abundance, and to be honest with you, much more than what we expected as a company and as shareholders of the company. It is our responsibility, and it is our also responsibility to include all the communities around us. हम आते हैं, एक जमीन खरीदते हैं, एक किसान की जो जमीनें हैं वो सारी किसानों की ही जमीन है। हम सब बैकवर्ड एरिया में जाके फैक्ट्रियां लगाते हैं, किसान की जमीन है, उसके बाद उसकी रोजी लेते हैं, उसकी जमीन उससे लेते हैं और अपनी फैक्ट्री शुरू करके उस किसान और आसपास के गांव वालों के बारे में हम भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि जो उसकी पुश्तैनी जमीन है, उसी जमीन के ऊपर हमने अपनी फैक्ट्रियों को खड़ा किया है। We recognize this, ladies and gentlemen, and we feel responsible for all the communities around us. We take it by our heart कि हमको वो सब करना है जो एज अ रिस्पॉन्सिबल कंपनी, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोगों को करने की जरूरत है। क्या मैं मानता हूं कि ये इंडिया के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है? मैसेज नंबर 4 फ्रॉम माय डियर फ्रेंड पुनीत, एब्सोल्युटली, सर्टेनली, क्लियरली, आई थिंक this China +1 is playing out, and most people who are in the international markets will perhaps agree with me on this, that a country like China owns 35-40% of the market share in the textile trade worldwide. We own 4-5%. If 10% of their share comes to India, our business almost doubles here. That's the level of opportunity that we are seeing. Our customers continue to tell us to get into new product categories. That's why from towels to sheets to rugs to carpets to many more things, and our customers continue to tell us, please do more products, we want to do more business with you. And it has only gotten more pronounced this over the last couple of years. So the opportunity is big. It's a $1 trillion global trade market there. एंड हमारी सरकार का जो विजन है वो टोटली अचीवेबल है। लेकिन कमिंग बैक टू वेयर आई स्टार्टेड, इसमें यहां से हम लोगों को बड़ा रोल प्ले करना है। सरकार ने हमको बहुत कुछ दिया है और बाकी जो हम मांग रहे हैं, कोई चीज की मना ही नहीं है। मैं तो आज खुद देख के आया हूँ, 1.5-2 घंटे सुन के आया हूँ मैडम की बातें, और कोई चीज की मना ही नहीं है। सरकार हमारे से कंधा मिला के चल रही है। दे आर एम्पावरिंग अस गाइस। वी नीड टू डू आवर जॉब। इफ वी डू आवर जॉब, this journey from 40 to 100 will not take us much time, I can tell you, for exports. And irrespective of what, if we listen to the consumer, the domestic business will perhaps double, quadruple over the next 5, 7, 8 years, and the future is very bright for us. So thank you very much. I know it is very late. I have more speakers following me, but it was a pleasure speaking to all of you. Thank you. Hello. Yeah. Hello. Yeah. So that was very inspiring from you, Rajesh bhai. Straight away come to the question. What do you think is the future of home textile, especially India versus China? So look, this I don't like to boast, but यार यहाँ पे हमारा हक बनता है। हाँ, so ये होम टेक्सटाइल में खास करके टावल और बेडशीट के चाइना हम है यार, हम इंडियंस हैं। हाँ, so for towels, for example,
India's got a 42% market share in the US, and China is 24. I am not finished, guys. In bed sheets, we are 55 and they are 24. हाँ? तो इस कैटेगरी के तो दादा यार हम इंडियंस ही हैं. हमारे 5-7 भाई बंद है, हम और वो मिलके इस इंडस्ट्री में, तो हमको नहीं डर लगता यार चाइना से. ग्रेट. दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू कंसिडर एंड द नीड एंड द फीडबैक ऑफ द एंड कंज्यूमर ऑफ द टेक्सटाइल. यार देखो, ये पूरा भाषण में एंड कंज्यूमर का देके आया हूँ. Please elaborate that. I heard that. Boss, let me just repeat here, Ashish bhai. I, as a leader of my businesses, I tell all my people, मेरे बच्चों के मुंह में खाना मेरा कस्टमर डालता है यार. हाँ, मैं नहीं डालता, मेरा कस्टमर डालता है बस. सो इसी फिलॉसफी से हम जी रहे हैं. और मैंने अभी आप लोगों को बताया, फोकस करिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए, देखिए क्या चाहता है वो कस्टमर, क्योंकि वो फिकल माइंडेड भी है, वो उसका रोज माइंड चेंज हो रहा है. ये गूगल के ज़माने में वो इतने वेल इन्फॉर्म्ड हैं कि उनका माइंड है वो आज से कल और कल से परसों में बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है. हम लोगों को बड़ी ध्यान से सुनना है इसके. So the business has to start and finish at your customer. That's it. You know, it's a very simple answer to your question, Ashish bhai. Well said. Sir, आप कंपोजिट टेक्सटाइल मिल्स वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड टेक्सटाइल कैसे एवेल्युएट करेंगे उसको? Let me come back to my dear friend Rajendra Agarwal's film there. यार, जो चीज शिद्दत से करेंगे, वो चाहे कंपोजिट है या बंट के है या गांव में है या शहर में है, वो कहीं है यार, वो बिजनेस अच्छा ही चलेगा. हाँ, वो पैशन चाहिए जो राजेंद्र जी ने हम लोगों को दिखाया. हमारे पास सब कुछ है आशीष भाई. हाँ, सो सी लुक, वी आर अ कंट्री, वी हैव ऑल द रिसोर्सेस. ये कॉटन पकड़ लो आप, पॉलिएस्टर ले लो, विस्कोस ले लो, सिल्क ले लो. हमारे पास क्या रॉ मटेरियल नहीं है? हमारे पास एनर्जी का सोर्स है, हमारे पास हमारा कोयला है, हमारे पास टेक्सटाइल की 150 साल की स्किल की हिस्ट्री है, हमारे पास हौसला है. प्राइम मिनिस्टर से शुरू होता है. जब गुजरात में थे तब कहते थे फार्म टू फॉरेन, ये उनका स्टेटमेंट कॉइन किया हुआ है कि हमको फार्म से जो रुई निकलती है उसको फॉरेन भेजना है. ये 20 साल से, 15 साल से, 20 साल से हम सुन रहे हैं. हमारे पास हौसला है, हमारे पास सरकार का सपोर्ट है, हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप है. हम शिद्दत से कुछ भी करेंगे. वी आर ऑलरेडी अहेड गाइज. वी आर ऑलरेडी, दिस एज अ कंट्री, this we have advantages. We keep talking about, you know, this are disadvantages, but we have several advantages as a country, and whichever shape and form, we have to find our way to be the best, to excel and to do your job correctly. So I believe any which way everybody will be successful. Thank you. The last question is, हम सूरत से आ रहे हैं, जो एमएमएफ कैपिटल है इंडिया का. हमारे यहाँ जो वोवन फैब्रिक बनते हैं, पहले ज़्यादातर यान यूज़ होता था रिलायंस का. वो हम को ब्रांड भी करते थे, भाई ये रिलायंस के यान से बना हुआ कपड़ा है. बाद में आपने इंट्रोड्यूस किया पॉलिएस्टर यान, तो सेकंड को ब्रांडिंग वाज वेल्सपन. तो हाउ डू यू सी द एमएमएफ टेक्सटाइल एंड द फ्यूचर ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल एंड एमएमएफ टेक्सटाइल? Brilliant question here, Ashish. So we all know worldwide almost 65% of textiles is man-made fibers. हमारे देश में वो रेशियो उल्टा है. हम लोग अबाउट 30-35% कॉटन है, बाकी का 30-35% मैनमेड है, बाकी का सारा कॉटन से आता है. So not that cotton will not grow, and we heard today that we have the biggest acreage and the smallest yield. So हमारा कॉटन का क्रॉप तो यहाँ से भी डबल हो सकता है जब यील्ड ठीक होगी. और यील्ड ठीक होगी, इस सरकार के साथ कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं होगा. यील्ड ठीक होगी, हमारा कॉटन का क्रॉप डबल होगा. लेकिन दुनिया के साथ अगर टेक्सटाइल में हमको प्लेयर बनना है, तो मैनमेड फाइबर में हम लोगों को कंपेटिटिव होना ही होगा. उसके अलावा देखिए, मैनमेड फाइबर्स कुछ एडवांटेजेस ऑफर करते हैं. और आज आप देखिए, एक आम आदमी के लिए कॉटन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है. आज की कॉटन की कीमतों को आप देखोगे, कॉटन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है एक आम आदमी के लिए अफोर्ड करना.
So synthetic is the answer. Synthetic को हम लोगों को imbibe करना होगा. अभी historically synthetic textiles में इंडिया में बहुत सारे टैक्स रिलेटेड, दिस टैरिफ रिलेटेड डिसएडवांटेजेस थे, जो बाय एंड लार्ज लेट अस से हम लेवल प्लेइंग फील्ड पर आ गए हैं. कॉटन ज़्यादा फेवर्ड है हिंदुस्तान में सरकार की तरफ से भी. मैन मेड फाइबर में भी मेरे को लगता है कि कुछ फेवर की जरूरत है. दिस एवरी बिजनेस विच इज इन इन्फेंसी मैडम needs a little tailwind for the first 5, 10, 15 years, a little support from the back, and if that support gets provided, this absolutely. So, you know, we have bright enough people in this room to make even man-made textiles happen. And of course, man-made is a performance fiber. And, you know, that leads into the second part of your question, which is about technical textiles. And, you know, technical by nature is performance. So, you know, this you can't, they are actually one. So there has to be man-made fiber and alternative fibers when you talk about technical textiles, and they absolutely go this hand in hand together, Rashish bhai. So, but very good question. Thank you. That PLI scheme is basically for man-made and technical. Thank you very much. So we should be proud that we are ahead of China in towel and bedsheet, and Welspun has a great role to play in that. Thank you very much. Thank you.